अब हमारे साथ जुड़ रही है। ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आप कुछ हफ्तों से ये बात कह रहे थे कि बाजार वल्नरेबल है, बाजार वैल्यूएशन के हिसाब से वल्नरेबल है, थोड़ा अहेड ऑफ टाइम हो गया है और आप थोड़ा रुक के अटेम्प्ट करेंगे एनी बाइंग। जियोपॉलिटिकल ट्रिगर हो सकता है लेकिन बाजार में एक फॉल आ रही है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को इस समय? वेल, मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है एंड कंसिडरिंग इंडिया इज सच अ बिग इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, जो क्रूड प्राइस में अगर $97 जो है per barrel today, if it goes up to 120, 130, structurally, I think it will be a big issue for India. And we will find it hard to, continue to retain our deficit target or our debt number or continue to control inflation in a way. अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें कि रशिया में और यूक्रेन में क्या हो रहा है आज, Russia is a net exporter of oil and gas. About 60% of their exports are only oil and gas. About 30% of Russia's GDP comes from oil and gas. तो अगर कोई सोचे तो one way to look at this is, they are the biggest beneficiary of the narrative and the debate and the mild altercations that might be happening today. तो मेरे ख्याल से ये जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि they're also benefiting with it in a way, and it will probably go on and get dragged on for a significant amount of time. देखिए, एक साइकोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि आप इस समय एक पोजीशन में आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर इस समय क्या कर रहा है। इस बुल मार्केट में पहली बार वॉलेटिलिटी और फियर हुआ है, तो आप, क्योंकि यू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव ऑल्सो रिटेल बिजनेस, रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस समय क्या कर रहे हैं? क्या पैनिक में आ चुके हैं वो? क्या इस समय एक प्रकार का जो बाय हाई एंड सेल हायर का जो मेथोडोलॉजी थी वो चेंज हो गई है? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। If you think the markets have rallied, like 50-100% पिछले साल में, अगर आप 18,500 to 16,900 का करेक्शन देखें तो it's barely 8-9%. So something has gone up 100% and come down 8-9%. So I don't think that warrants panic in itself. मेरे ख्याल से इतना panic नहीं है. The regulators have done a good job, SEBI and RBI, in terms of reducing the inherent leverage available for a retail trader. So there isn't that much leverage in the market today. So I don't think many margin calls are getting triggered or anything like that. And even agar aap aaj ki baat kare, Dow futures is a good benchmark to gauge volatility in a way. The markets open only in the evening, but Dow futures trade through the day, right? They were down 1.6 in the morning. Abhi they are down 1.3, 1.35. So in no way panic. I think it's a small correction. I don't think anybody's panicking yet, and I don't think one should panic either. People have to be cognizant to what the valuations are, and many of the things in the market have kind of corrected. If you look at the new internet stocks which came in, they've become a lot more reasonable today. So people are not just in India but across the world rewarding good numbers and kind of reprimanding bad numbers today, which I think is good, and it'll make the market more robust for the long term. एक अंग्रेजी में कहावत है दैट यू शुड नेवर वेस्ट क्राइसिस एंड वॉलेटिलिटी इज इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। सो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अगर हम इस मार्केट के पीरियड की बात करेंगे, फरवरी 2022, तो इन हाइंडसाइट डू यू थिंक दिस विल बी रिमेंबर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? जिसने हिम्मत करके शेयर लिए, दे विल गेट रिवॉर्डेड? वेल, टू प्रेडिक्ट आगे क्या होगा is a near impossibility, right? People often try and do it. लोग बोलते हैं कि buy this stock at price X and you will sell it at price Y in like 6 months and all that. Like, to be honest, किसी को पता नहीं है. I mean, people just say these things, and more often than not, it doesn't work out. But if I have to like make a larger call, I think
जैसे हमने पिछले साल देखा था 50%, और वी हैव सीन these crazy rallies in the market. If you go back in time, the Indian markets have done about 11% a year, 11% up a year in the last 1 decade, 2 decades. So I think returns will become a lot more, the volatility in a way will go down, and the market will be in a tighter range in the future than as large a range as we witnessed recently. And I don't think that's a bad thing. अगर कोई stock market में 11-12% कमा सकता है, and we have the benefit of a 10% LTCG tax, you're pretty much able to double your capital as an investor every 5 years or 6 years. That is an incredible rate of return for somebody to get from the market. So people should avoid listening to the noise, to the people who are saying कि अगले हफ्ते ये होगा, अगले महीने ये होगा, because किसी को पता नहीं होता, and they would be better off buying when they think market is reasonably valued according to our own historical average, and then holding for a reasonable amount of time, trying to take advantage of that LTCG and make that 11-12% a year. एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि आपको रिलेटिव वैल्यू इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, सिर्फ 50-60% फॉल जो रीसेंट कंज्यूमर टेक कंपनीज में हो गया है. कुछ और ऐसे एरियाज जहां पे आपको रिलेटिव वैल्यू इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, जहां अर्निंग्स कुशन है, आपको नाम पसंद थे बट वो अहेड ऑफ फंडामेंटल्स थे, जहां देयर इज अ केस इमर्जिंग नाउ? Well, it's a little bit of an alternative asset, but I think gold is becoming very interesting. Gold, पिछले 5-10 साल में, it has become a very uncool investment. We've had crypto, we've had all these things which have so much more inherent volatility than gold. But if the inflation numbers are set to climb, as a hedge against inflation, I think adding 10-20% of your portfolio into gold, I think is a great idea. If you go back in time, agar aap sochiye, think of a market which has more history than ours. Look at America, for example. In the 70s, aapko kitna gold chahiye tha to buy a median house? You needed lesser gold in the 80s than you needed in the 70s. You needed lesser in 2000, and you need lesser today. So gold has always been a good place to retain value, and it acts as a really good hedge against inflation. So I would recommend, like people put in more money in gold and get more diversification going, not just amongst stocks, but also amongst asset classes like gold. कॉन्ट्रा कॉल, बहुत अच्छी आपने ये व्यू दिया, बिकॉज गोल्ड 8-9 साल से चला नहीं है, इन्फ्लेशन का हेज है, एवरीथिंग सीम टू बी वर्किंग, सो थोड़ा पोर्टफोलियो का पोर्शन गोल्ड में लगा के रखें. निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच टुडे आज हमसे बात करने के लिए, ऐसे सेंसिटिव मार्केट में हमारे व्यूअर्स के लिए एक तरह से हैंड होल्ड करने के लिए और अपने कैंडिड व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.